Hello students, welcome to my economics classes. Today we will study 25 MCQs from statistics. आमे previous class रे 25 MCQs करथिले आज पुन 25 MCQs करबा statistics रे 60 क्वेश्चन देखिबा जी. The under root of two coefficient gives us the value of correlation coefficient. माने कोन देछि the under root of two dash coefficient gives us the value of correlation coefficient. मान देखिए को कोएफिशिएंट कोरिलेशन लो जब हम अंडर रूट करबा हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल पाबा. हम जानछंती r² = bxy * byx जानछंती. तेणु हम r पाइबा केमती bxy * byx रो होल रूट ऑफ जोडे हमर कोन रिग्रेशन कोएफिशिएंट. आंसर आसीबो रिग्रेशन कोएफिशिएंट माने अंडर रूट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट gives us the value of correlation coefficient. Next question jiba. If both the regression coefficients are negative, the correlation coefficient would be what? The regression coefficient both of the negative होची हम correlation coefficient मध्य negative होगा. मानछंती जदि sin माइनस थिबो त हम correlation coefficient माइनस होबो. यदि टू वेरिएबल जदि प्लस थिबो हम sin मध्य प्लस होबो. Next question. Mention the correct answers. The ranks according to two attributes in a sample are given below. हमको दूटा रैंक दे दीची आम कौन करबा स्क्वायर मान रैंक कोरिलेशन पाइबा. एडी रिपीटेड नहीं रिपीटेड नथिले आम रैंक कोरिलेशन केमति पाइबा 1 - 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइड बाय n³ - n लो -n एति कोन फार्मूला थिला. आम d केमति बाहर करबा आम d बाहर करबा डेविएशन बाहर करबा r1 - r2 तापर d स्क्वायर बाहर करबा. एते d स्क्वायर बाहर करबा देखा हम r1 - r2 केते आसीबो फर्स्ट -4 ता समेशन बाहर करबा समेशन d स्क्वायर बाहरबो. देखो एडी फर्स्ट d बाहर करबा d आसीबो 5 - 1 4 - 4 -2 0 2 4 d रो स्क्वायर बाहरबो केते 16 4 0 4 16 केते आसीबो टोटल हमर होची d स्क्वायर आसीबो समेशन d स्क्वायर होची 40. तबे हम देखिबा एठी फार्मूला देखिबा 1 - 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइड बाय n³ - n. तबे आसीबो 1 - 6 * 40 रो स्क्वायर डिवाइड बाय केतुटा हमर n होची नंबर ऑफ आइटम्स केते अछि 5 5 रो क्यूब -5 -5. तब नेक्स्ट देखिबा 1 - 6 इनटू समेशन कोन थिला समेशन d रो स्क्वायर थिला माने 40 40 * 60 डिवाइड बाय होची केते 5 रो क्यूब 125 - 5 1 - 120 सॉरी 240 डिवाइड बाय 120 ए 1 टा बाहर रहइबो 1 - 120 सॉरी 240 डिवाइड बाय 120 कटिଯିबो 2 रे काटि दियो 12 * 24 2 आसीबो 1 - 2 कते आसीबो -1. तबे हम रैंक कोरिलेशन केते आसीबो हम रैंक कोरिलेशन होची -1. Next question. If sum of the product of deviation of x and y is from their means, that is summation x y 0, the coefficient correlation shall be what? हम जानछंती कैलकुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन फार्मूला कोन summation xy डिवाइड बाय summation x - x बार स्क्वायर इनटू summation y - y बार होल स्क्वायर रो होल रूट ऑफ. अज ए समेशन x y वैल्यू केते छि एडा 0 हे गेला हम टोटल वैल्यू केते हे जिवो 0. जी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज डिफाइंड एज हम जदी कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन कोन होची r स्क्वायर तब प्रोबेबल एरर केते आसीबो 0.6745 स्टैंडर्ड एरर होची हमरा प्रोबेबल एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
द कोएफिशिएंट रो तार भेरीज केते थाए तार लाइज बिटवीन +1 टू -1 द लिमिट थाए कोएफिशिएंट कोरिलेशन रो द लिमिट थाए भेरीज बिटवीन +1 टू -1 द नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल जदी ओरिजिन मींस हम एडिशन करबा बा सब्ट्रैक्शन करबा स्केल मींस मल्टीप्लिकेशन करबा डिवाइड करबा जदी हम कोन से कांस्टेंट टर्म को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करले मध्य हमर कोन कोएफिशिएंट कोरिलेशन चेंज होबो नाही आंसर है बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन when coefficient of skewness is negative जतले coefficient of skewness negative हो ता वैल्यू केते होबो q3 plus q1 less than 2q2 एठी मन रखिबो q1 होची हमर मीन q2 होची मीडियन q3 होची मोड तिन हम तो जानचंती एठी कोन बेतले स्क्यूनेस नेगेटिव होबो एतबे कोन होबो q3 plus q1 less than होबो 2q2 आंसर होबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट आम जते पॉजिटिव स्क्यूड हुए तेले कौन हुए पॉजिटिवली स्क्यूड हुए कौन राइट हैंड को दे एटा जदी हबो एटा मीन हबो एटा मीडियन हबो एटा हबो मोड जते पॉजिटिव स्क्यूड हुए मीन टा ग्रेटर देन थाए मीन टा कौन थाए ग्रेटर देन माने मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड थिले पॉजिटिव स्क्यूड होबो देटा लेस देन थिबो नेगेटिव होला राइट हैंड को जाइथिले जदी डिस्ट्रीब्यूशन लो स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन लो जदी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन लो जदी राइट हैंड जाइथिबो त कोन पॉजिटिव होबो अदि लेफ्ट हैंड जाइथिबो नेगेटिव स्क्यूड होबो जतले पॉजिटिव होबो ततले कोन होबो मीन टा ग्रेटर देन होबो तेनो कोन होबो आंसर मीन इज ग्रेटर देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कौन हम मोड इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन आंसर ऑफ ए द सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज आमर वेरिएंस फॉर्मूला कौन हम समेशन x माइनस x पर स्क्वायर डिवाइड बाय n आंसर ऑफ ए आंसर आसीबो ए नेक्स्ट क्वेश्चन when beta 2 less than 3 the distribution is I mentioned एटा कर्टोसिस देखोची कर्टोसिस कोन देखता है पिकनेस देते है जतबे होची हम जानती बीटा 2 दा ग्रेटर देन 3 हेले कोन हबो लेप्टोकेटिक हबो बीटा 2 दा लेस देन 3 हेले कोन हबो प्लेटोकेटिक हबो बीटा 2 दा इक्वल टू 3 हेले मेसोकेटिक हबो तर आंसर कोन हे जिवो हमरो प्लेटोकेटिक हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन when coefficient of skewness is 0 the distribution is जतले हमर skewness रहबने skewness means asymmetric जोटा symmetric नथिबो यदि skewness 0 हे जछन कोन symmetric हम कोनोसी asymmetric रहबनी symmetrical नेक्स्ट क्वेश्चन the measure of variation that is least affected by extreme observations is माने आ भीतर को वेरिएशन दा एक्सट्रीम वैल्यू को कोन करते हैं लीस्ट अफेक्ट करते हैं रेंज कोन देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू एटी एक्सट्रीम वैल्यू काम करता है मीन डेविएशन में मध्ये एक्सट्रीम वैल्यू वर्क करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में मध्ये हम कोन करथांदी मीन हम एक्सट्रीम वैल्यू को लेथांदी क्वार्टाइल डेविएशन में कोन देखोंदी q1 क्वार्टाइल डेविएशन में कोन देखोंदी q1 q2 q3 के देखोंदी एटी एक्सट्रीम वैल्यू वर्क करे नाही वेरी लिस्ट काम करे माने काम करे बहुत कम करे क्वार्टाइल डेविएशन तर कोएफिशिएंट वेरिएशन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला हमें केमती कोएफिशिएंट वेरिएशन केमती बाहर करबा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू डिवाइड बाय मीन इनटू 100 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वार्टाइल डेविएशन इज व्हाट हम क्वार्टाइल डेविएशन केमती बाहर करबा फार्मूला तार अछि म्हणजे 2/3 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होची क्वार्टाइल डेविएशन मध्ये फार्मूला यदि मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर कौन करछे हम जानते यदि प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अछि ये कौन देखिबो 99.73 आइटम देखि हम कहथिले यदि मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन देखुची लता वैल्यू केते आस्तुला हमरो 66 बा 68 पाखा में केसे जुतला 68 अदे मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आस्तुला आसले केते 95 3 आसले को देखिबो 99.73 आइटम्स देखिबो तापर कोन दोची
कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला आम जानते कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बाहर फार्मूला कौन होची Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 माने क्वार्टाइल डेविएशन 1 क्वार्टाइल डेविएशन 3 क्वार्टाइल डेविएशन रू माइनस करबा फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन को डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 कर देला हमर कोन से कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज minimum when taken from sum of the square division is minimum hobo am taken कोन नबा mean in a series of values of 1 value 0 geometry जदि हम जानते geometry mean कोन हम जो जोडा value देइथिबो जदि मल्टीप्लिकेशन कर रूट ओवर कर करिया दे गुटे सपोज a equal to 0 अदि गुटे 0 हबो तार value केते geometry mean 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ व्हाट आमको हिस्टोग्राम कोटा यूजफुल कोई थाए ग्राफिकली कोटा को मेजरमेंट करे हिस्टोग्राम यूज करने में मोड केतले हिस्टोग्राम को यूज करते द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन एंड मोर देन ऑब्जेक्ट्स कॉरेस्पॉन्ड टू जेतबे देखि कोन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन और मोर देन ऑब्जेक्ट्स कॉरेस्पॉन्ड आमे देले कोन आमे तो देखंती ऑब्जेक्ट्स रे माने ऑब्जेक्ट्स मध्ये जेतबे मेजरमेंट करंती एदा कोन मेजरमेंट करंती मीडियन को मेजरमेंट आंसर हबो मीडियन। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 864 एंड 512 इज आमे जति ज्योमेट्री मीन कोन आसीबो दा फार्मूला जो दुटा वैल्यू देथिबो से दुटा वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करबो तार रूट ओवर बाहर कर दबो बाहर गले आर आसीबो केते 64 आसीबो आंसर हबो 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए मॉडरेटली asymmetrical distribution आम जदि asymmetrical distribution arithmetic mean geometry mean harmonic mean relationship केमते arithmetic mean is greater than geometry mean is greater than harmonic mean answer of A। next question what is the median of 36 72 49 45 60 33 61 72 52 आम जदि मीडियन कैलकुलेट कला बेले आम कौन करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स को आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सजे लिखा जब आम असेंडिंग ऑर्डर सजे लिखा देखिए मीडियन केते हम मीडियन केते आसीबो जब आम सजे टोटल लिखुचंती मीडियन आम आसी मीडियन आसीबो 52 देखो फास्ट आसीबो केते 33 और फास्ट आसीबो 33 33 पर 36 36 45 45 49 52 60 61 72 72 आछी 72 2 3 आछी देखे देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमर कोन आसला 9 आछ जाउची तबे 9 आछ गेलको हमर ये कहते 4 पड़े गले याठी मते 4 हमर मिडिल लिखे रही 52 नॉर्मली एते न करबो सेमते बाहर करि परबो n + 1 डिवाइड बाय 2 9 + 1 डिवाइड बाय 2 केते आसला 10 to 2 द केमती हम जंती n + 1 डिवाइड बाय 2 थाइटम हम नंबर पर 9 + 1 डिवाइड बाय 2 केते आसीबो 10 बाय 2 केते 5 फिफ्थ आइटम केते हमर होची 52 ना आंसर आसीबो 52। नेक्स्ट क्वेश्चन the following equation indicates the relationship among average median and mode हम जानते हैं median mode with the relationship कहता है mode equal to 3 median minus 2 mean mode equal to 3 median minus 2 mean। next question consider the following statements median is not useful while dealing with skewed distribution such as income distribution or price distribution। next question next option कौन अछि median can be determined graphically by drawing only one object mode can be used to describe qualitatively phenomena एटी कौन देछि this median is not useful while dealing with skewed distribution such as income distribution or price distribution किंतु median useful होता है हम skewed distribution रे डीलिंग करिया पई income distribution price distribution को ऑप्शन वाज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन median can be determined graphically by drawing only one object हम median को डिटरमाइन करिया पई हमको टू only one two
आइदर राइट न लेफ्ट ट्रू अजिब दरकार हुए नेक्स्ट होची मोड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली फेनोमेनल एटा करेक्ट अछि मोड आमे क्वालिटेटिवली देखि थांती तेणु जेहेतु एठो तळे जो स्टेटमेंट देछि ऑप्शन देछि ता भितर जेहेतु हमर नाइ ओनली 3 तेणु एठो कोन नबा बोथ 2 and 3 को काउंट करिबा नेक्स्ट होछि ड्यूरिंग 1 year द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज इज 3 हम देखि गोटे 1 year रे रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज केते अछि 3 हयर आज ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर केते अछि 2 फॉर एवरेजिंग दिस रेशियो आम जानते रेशियो क्षेत्र ज्योमेट्री मीन यूज करती फास्ट 3 वैल्यू था तापर 2 वैल्यू था केते आसबे रूट ओवर 6 रूट ओवर जति आसबे लिखबो एटा कते जे तेन हमर एटा को रेशियो क्षेत्र रे कोन काम यूज करछि हम यूज ज्योमेट्री मीन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग रेशियो क्षेत्र रेशियो ऑफ परसेंटेज ग्रोथ क्षेत्र रे ज्योमेट्री मीन को यूज करा दे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द cumulative frequency diagram which one of the following types of average can be estimated this is cumulative frequency diagram cumulative means अजीब देखो अजीब फिगर जो देला cumulative frequency को क्षेत्र में यूज करंती एटी हमें मीडियन को कैलकुलेट क्षेत्र रे cumulative frequency को यूज करा जाय this is the right hand tail of frequency distribution is found to the mirror image to the left hand tail हम तो मिरर रे देखंती हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड देखबे लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखा जाए तो जति राइट हैंड लेफ्ट हैंड देखा जाय एटा कोन हमर बैलेंस हे जिवो जादे कोन आसीबो सिमेट्रिक हे जिवो तो देखि नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स correlation analysis helps in determining the relationship between two or more variables it does not tell us anything about the cause and effect relationship correct हम correlation का ऑप्शन relationship between देखा जाए two variables रो सी relationship कहि न थाए cause and effect द causality को cause और effect relationship को correlation का ऑप्शन शो करि न थाए ऑप्शन 1 द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन the ratio of explained variation to the total variation is called coefficient correlation incorrect आम कौन देखिए रेशियो ऑफ एक्सप्लेन वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन मतलब एक्सप्लेन वेरिएशन रु आम कौन देखिए एक्सप्लेन्ड वेरिएशन रु एटा जानते टोटल वेरिएशन को हम डिवाइड करले आम कौन पाइबा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट बाहर करबा डिटरमिनेंट बाहर करबा कोएफिशिएंट कोरिलेशन नुहे तेनो ऑप्शन 2 द इनकरेक्ट तब दे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन Pearson coefficient always assumes linear relationship and is under effect by the extreme items yes Pearson coefficient correlation extreme items को मध्य काउंट इफेक्ट करता है ऑप्शन हम करते 1 and 3 नेक्स्ट क्वेश्चन if for a given data mode 5 median 15 mean 20 it means that the sample data is I mean जदि mean is greater than median greater than mode हुए आमर कोन हबो एटा स्क्यूड राइट टेल हबो जदि पॉजिटिव स्क्यूड हबो जदि mode is greater than median median is greater than mean हला एटा हबो नेगेटिव स्क्यूड हबो स्क्यूड टू द लेफ्ट एटा जेतो mean 20 अछि mean is greater अछि एते पॉइंट कोन पॉजिटिव स्क्यूड टू द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन given the following data 1 2 3 4 and 100 the best measure of center tendency is the एटी कोन देखि 1 2 3 4 and 100 पर एक्सट्रीम वैल्यू देखि हेति पॉइंट सबुट बेस्ट की हमरो मीडियन कोन भाई देखो 1 2 3 4 and 100 ना और मिडिल लिखि अछि 3 द मीडियन तने मीडियन द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा Next question which one of the following indices satisfy the both the time reversal and factor reversal test को टेस्ट satisfy करता है को इंडेक्स satisfy करता है both time reversal and factor reversal test को Fisher's index number satisfy करता है both time reversal and factor reversal next question our answer है कौन Fisher's index number next question consider the following statements कौन देखिए quartile deviations is more instructive range as it discards the dispersion of extreme items is the correct
कौन भाई क्वार्टाइल डेविएशन कौन थे हम पूरा एक्सट्रीम आइटम को काउंट कर कौन भाई आम जो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3 थाए 75% आम यूज करते ताठू एक्सट्रीम आइटम यूज करपारती ना 75% से क्वार्टाइल डेविएशन मोर इंस्ट्रक्टिव रेंज आज इट डिस्क्राइब्स द डिस्पर्सन ऑफ द एक्सट्रीम आइटम्स. Next question, next option, coefficient quartile deviation cannot be used to compare the degree of variation in the different distributions. एठी कौन देला coefficient of quartile deviation cannot be used to compare the degree of variation in different distribution. एठी दिजी coefficient quartile deviation कौन हो cannot be comparison करि पारिबनी cannot be sorry এটা coefficient quartile deviation can be used to sorry coefficient quartile division टा can be used to compare the degree of variations in different distribution degree of variation को compare करिया पई हमें coefficient quartile division को यूज करि परिबा एटा कैन नॉट दिस माने ऑप्शन इनकरेक्ट. There are 10 decile for a series which one of the above statement तेला कोन आमे जो there are 10 decile for a series आमे कोन थिला decile जो थिला आमे 10 पार्ट थिला किंतु नंबर ऑफ अंक नथिले D1 टू D9 जाय नथिले किंतु एटा आंसर हबो ओनली 1. Next, which of the following statement is not correct? कोटा correct नुहे. Fisher's index number lies between last pair index patches index tick. It is the arithmetic mean of last pair of patches na it is geometric mean. It is geometric mean of last pair of patches index. It is equal to L or P. If L equal to last pair equal to price index कहबा patches index कहबा एतले L equal to कोन हो P हे जिवो तो ना आंसर कोन हो is the arithmetic mean of L and P. Next question, let x 9 minus u divided by 3 and y equal to b minus 4 and the correlation coefficient between u and b is minus 0.93. Then the correlation coefficient between x and y will be हम जानते कोएफिशिएंट कोरिलेशन रे हमर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन स्केल हम ओरिजिन स्केल रे चेंज हो नाही तो आंसर हबो जेतु sin अछि माइनस से कोन माइनस 0.93. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the calculation coefficient of correlation between x and y is 0.3 then the coefficient correlation between minus x and 2y is what? आमे जंती कैलकुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन ले इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल आमे किछि मल्टीप्लिकेशन करछन कांस्टेंट टर्म को कैलकुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन चेंज हो नै किंतु साइन यदि माइनस साइन थिबो प्लस थिले प्लस रहबो पॉजिटिव थिले पॉजिटिव रहबो किछि चेंज होनी यदि नेगेटिव साइन थिबो एटी साइन केवल चेंज हो जिवो एटी माइनस 0.3 आ जिवो आंसर. Next, the standard deviation of 6 numbers. एटी कोन दिला 6 नंबर देछि स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर करले आंसर हबो कोन 1 हबो आंसर आसीबो 1 बाहर करबो केमती आमे स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला कोन समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n लो होल रूट करू बाहर करबो देखिबो आंसर केते आसीबो 1. आज हम 100 जा करले आउ जा क्वेश्चन थिबो नेक्स्ट क्लास रे हम कर दबा कहार को डाउट रहबो मते मैसेज करबो हला हम टेलीग्राम चैनल समस्त जॉइन कर जिवो क्लास को लाइक कर दबो सब्सक्राइब कर दो तुम फ्रेंड मानन को शेयर मध्य कर दबो. थैंक यू.